So the question is, in case if a company has written off a major chunk of its assets in a particular year, how it is going to impact the financial statements? So Siddharth, let me answer this question in this way. There is an accounting standard number 36. It is known as Index 36, which is on impairment assets. Now, what is impairment? Impairment is a company, and when I say company, all companies, it is applicable to all companies. A company has to charge depreciation every year on its assets as per the law of the land, which is the normal depreciation, which is the normal 10%. So 10% depreciation every year company will keep on charging, assuming that the asset is operational, functional. Sometimes, Siddharth, it can happen that a particular asset has become useless. Meaning what? Meaning because of change in the technology or because of something else, this asset is now not going to be used at all. It is almost like scrap. And let's say in your books, this asset is currently being shown at a value of 40 crore. 40 करोड़ की अमाउंट पे ये एसेट आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है. The management of the company realized that this asset is useless. This asset is not going to generate any income for us. So might as well throw it off and forget about it. So under Index 36, Indian Accounting Standards 36, which is on impairment, such losses, such reduction in the value of an asset, such unexpected, abnormal reduction in the asset are known as impairment. Companies in this country are under obligation. On the date of the balance sheet, they have to do the impairment test for all their assets. And if they come to know that this asset has become useless, so they have to write off that asset and close it off. Now, so ये एसेट 40 करोड़ की थी. अब ये 40 करोड़ की एसेट्स को राइट ऑफ किया, तो उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे? इसको राइट ऑफ करेंगे बाय टेकिंग इम्पेयरमेंट कॉस्ट इन दी P&L. सो जैसे डेप्रिसिएशन आता है नॉर्मल, है ना, वो उसी तरह से इम्पेयरमेंट आता है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट. सो वो 40 करोड़ का लॉस आपकी बुक्स में आ जाएगा. ओके, सो अच्छा, नाउ दिस इम्पेयरमेंट लॉस, रिमेंबर, इट इज नॉट अ नॉर्मल एक्सपेंस, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, सो इट विल गो इन दी बॉटम. बट अल्टीमेटली ये जो आपका प्रॉफिट है उस साल का, वो प्रॉफिट इम्पेयरमेंट लॉस 40 करोड़ से इंपैक्ट होगा. यानी कि वो साल के जो आपके प्रॉफिट है वो 40 करोड़ से कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट. जो आपने कहा ना कि राइट ऑफ किया, तो उस राइट ऑफ को इम्पेयरमेंट कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में. सो वो 40 करोड़ का हिट कंपनी ने लिया है और वो 40 करोड़ से उस साल की जो प्रॉफिट है कंपनी के वो कम हो गए. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी, सिद्धार्थ.